हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं टेक्स्ट 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट 16। शुश्रूषो श्रद्धधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थनिसेवनात्। Synonyms: शुश्रूषो, one who is engaged in hearing; श्रद्धधानस्य, with care and attention; Vasudev, in respect to Vasudev; Katha, the message; Ruchi, affinity; Syat, is made possible; Mahat Sevaya, by service rendered to pure devotees; Vipraha, O twice born; Punya, Tirtha, those who are cleansed of all vice; Nisevanat, wise service. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation: O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Purport: the conditioned life of a living being is caused by his revolting against the Lord. There are men called devas or godly living beings, and there are men called asuras or demons who are against the authority of the Supreme Lord. In the Bhagavad Gita 16th chapter, a vivid description of the asuras is given in which it is said that the asuras are put into lower and lower states of ignorance, life after life, and so sink to the lower animal forms and have no information of the absolute truth, the personality of Godhead. These asuras are gradually rectified to God consciousness by the mercy of the Lord's liberated servitors in different countries according to the supreme will. Such devotees of God are very confidential associates of the Lord, and when they come to save human society from the dangers of godlessness, they are known as the powerful incarnations of the Lord, as sons of the Lord, as servants of the Lord, or as associates of the Lord. But none of them falsely claim to be God themselves. This is a blasphemy declared by the Asuras, and the demoniac followers of such Asuras also accept pretenders as gods or his incarnations. In the revealed scriptures, there is a definite information of the incarnation of God. No one should be accepted as God or an incarnation of God unless he is confirmed by the revealed scriptures. The servants of God are to be respected as God by the devotees who actually want to go back to Godhead. Such servants of God are called Mahatmas or Tirthas, and they preach according to particular time and place. The servants of God urge people to become devotees of the Lord. They never tolerate being called God. Sri Chaitanya Mahaprabhu was God himself, according to the indication of the revealed scriptures, but he played the part of a devotee. People who knew him to be God addressed him as God.
but he used to block his ears with his hands and chant the name of Lord Vishnu. He strongly protested against being called God, although undoubtedly he was God himself. The Lord behaves so to warn us against unscrupulous men who take pleasure in being addressed as God. The servants of God come to propagate God consciousness, and intelligent people should cooperate with them in every respect. By serving the servant of God, one can please God more than by directly serving the Lord. The Lord is more pleased when he sees that his servants are probably respected, because such servants risk everything for the service of the Lord and so are very dear to the Lord. The Lord declares in the Bhagavad Gita 1869 that no one is dearer to him than one who risks everything to preach his glory. By serving the servants of the Lord, one gradually gets the quality of such servants, and thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. Eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God. Eagerness. आज रीड करते करते थोड़ी जाना है यार, जाना है। वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा। समझाइए जो भी लिखा है वो समझाइए। जो समझो जो ऐसे चीज लिखा है वो समझाइए। वो तो फिर डबल हो जाएगा ना। नहीं कुछ नहीं होगा, चलेगा। वो एक वन श्लोका पर डे सीरीज। यस। वो कल से करेंगे। नहीं, कल से फिर टेंशन नहीं है। नहीं नहीं। मैं समझाऊँ क्या? वो मेरे को बताइए इसको। बताइए। वो मतलब मुझे पर्पट से इतना समझ में आया। देयर टू टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज। जो मतलब गॉड के सुप्रीमेसी को मानते हैं वो लोग को ऐसे देवास बोला गया है, गॉडली लिविंग बींग्स, एंड अदर आजकल असुर डेमंस। देन जो असुरस एंड डेमंस है ये ऐसे वो एक लोअर स्टेटस ऑफ लाइफ इनको मिलता है, ताकि वो भगवान को, क्योंकि वो एनवियस थे भगवान को, तो उनको ऐसे आसुरिक इसलिए मिला ताकि वो भगवान के एनवियस रह सके। एंड देन जो अ, भगवान के जो कौन बोलते हैं क्या, सर्वेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस पे डिफरेंट इनकारनेशंस के थ्रू आके ये डेमोनियक लोग का कॉन्शियसनेस को ठीक करते हैं। तो इनको आज ये भगवान के इनकारनेशन या फिर उनके डिवोटी इस टाइप का माना जाता है। एंड जो ये जो भगवान के जो डिवोटीज हैं समटाइम्स वो भगवान से अलग है, एंड वो ऐसा कभी भी नहीं सुनना चाहते कि वो भगवान है। But sometimes people address them as God, like यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जब चैतन्य महाप्रभु को गॉड करके इंडिकेट किया जा रहा था, तो वो अपने कान पे हाथ लगा के विष्णु का नाम लेते थे। देन जबकि वो खुद कृष्ण थे। हाँ, जबकि वो खुद कृष्ण थे, फिर भी वो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे कि एक डिवोटी के कैसा होना चाहिए। देन फौजी जैसे गॉड प्रोवाइड, एंड बेसिकली जो सर्वेंट ऑफ द गॉड उसका मेन काम होता है कि वो भगवान की जो वाणी भगवान के बारे में उसको प्रोपागेट करना, एंड जो भी लॉयर कॉन्शियस के जो भी जीवास है उनको अपलिफ्ट करना। एंड इसी एक्टिविटी से भगवान सबसे ज्यादा प्लीज होते हैं। एंड इसको भगवत गीता 18.69 यहाँ पे कोट किया गया है दैट no one is dearer to him than one who risk everything to preach his glory. By serving the servant of the Lord, one gradually gets the quality of such servant, and thus one becomes qualified to hear the glories of God. The eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee, eligible for entering the kingdom of God. The eagerness सुनने से ही आएगा। तत्र लौल्यम वपिमूल्यम। इसका मतलब बोली कृष्णा कृष्णा भक्ति लौल्यम। ग्रीड। लौल्यम मतलब eagerness, greed। ग्रीड वही, दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन। मेरे को अगर पूछेगा ये ग्रीड कहाँ से आएगा, ग्रीडी लोगों के संग करने से आएगा। ग्रीडी लोग के संग करने से आएगा। ग्रीडी लोगों के। हाँ, मतलब तो नहीं। ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है प्रभु, देयर इज नो वन इज डियरर टू हिम देन वन हु टेक्स एवरीथिंग टू प्रीच हिज ग्लोरी। ठीक है। बाय सर्विंग द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, अच्छा, वन ग्रेजुअली गेट्स द क्वालिटी ऑफ सच सर्वेंट्स।
And thus one becomes purified of the so by serving the servant of the Lord. Okay. One gradually gets the quality of such servants. And thus one becomes qualified to hear the glories of the Lord. अभी तक तो क्वालिफाइड भी हूँ मतलब ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड सुनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है ठीक है नेक्स्ट भगवान के जो सर्वेंट्स हैं वो अपना लाइफ को रिस्क कर देते हैं तो उनको जो सर्व करते हैं भगवान उनसे बहुत प्लीज होते हैं और जब हम उनको सर्व करते हैं तब वी आर क्वालिफाइड टू लिसन टू हिज ग्लोरीज तो हमें भी उन भक्तों का क्वालिटीज डेवलप हो जाता है हाँ तो हम सुन पाते हैं भगवान की ग्लोरीज मतलब अभी हम जो सोचते हैं वो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस मेंटल स्पेकुलेशंस उस हिसाब से समझते हैं हाँ जैसे एक सिनेमा का इमोशंस हमें एंटरटेन करता है वैसे ही भगवान का कथा भी हमारे लिए एंटरटेनमेंट है अभी अभी है अभी के लिए तो कोई बोलो वो बोलो तो क्या बोलो थोड़ा बोलो कोई बोलते ना कुछ सॉन्ग लिखने के लिए ठीक है 17 कुछ छोटा के लाइन बोलो मैं क्या बोलूँ आप बोलूँगा अच्छा देखो क्या क्या हुआ मेरे को बताओ सब कुछ पेड़ है Text 17. क्या समझ ये वाला जब क्या समझा क्या बोल रहे ये वाला जब Srinavatam क्रेजी है इसका Swakatha जो समझेगा Krishna एक यहाँ है Punya तो इसको देखो Sravanam Kirtana Hridyantasto म्यूजिक सेटिंग Hi करो Avadrani मतलब पब्लिक में Vidunoti प्लेस होता है Surit Satam. पब्लिक का नहीं स्पेस Synonyms. Srinavatam, those who have developed the urge to hear the message of Swakatha, his उसमें own टेक्स्ट words, आएगा प्रॉम्प्ट Krishna, डालने के the लिए personality of God, uh, Punya, virtues, Sravana, हाँ नहीं hearing, Kirtan, chanting, तो Riddhi उसमें टेक्स्ट Antastha, within one's उसमें heart, ऐड कर सकते हो he कहाँ के वो आए certainly, Avadrani, desire to enjoy matter, नहीं वो ऑप्शन आती Vidhunoti, है cleanses, Surit, मेरा ऑप्शन आता benefactor, है Satam, तो of the डॉक्यूमेंट डालो truthful. कर लेगा Translation. ओके Sri Krishna, the personality of Godhead, who is the AI Paramatma, Super Soul, is in everyone's heart, the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Purport. Messages of the personality of Godhead, Sri Krishna, are non different from him. Whenever, therefore, offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Sri Chaitanya Mahaprabhu, in his Siksashtaka, declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound. But unfortunately, we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy name. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. नहीं, उसमें क्या है बताओ पूरा The Lord is reciprocally respondent to his devotees when he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about it. The Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Only a very few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. The material sins are products of our desires to lord it over material nature. It is very difficult to get rid of such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee making progress on the path of back to Godhead.
Many stalwarts in the devotional line fell victim to these allurements and thus retreated from the path of liberation. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. To become restless in the contact of woman and wealth is not an astonishment, because every living being is associated with such things from remote time, practically immemorial, and it takes time to recover from this foreign nature. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances. Gradually, all disturbing elements are eliminated from his mind. बताइए क्या समझे? हम्म, आप सुनाइए। बताइए। Giving message of the personality of Godhead Sri Krishna are not different from him. Whenever therefore offenseless hearing and glorification of the Lord are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personality. So यहाँ पे बोले कि भगवान के वाणी में कोई अंतर नहीं है। Sri Chaitanya Mahaprabhu in his 600 declares clearly that the holy name of the Lord has all potencies of the Lord, and that he has endowed his innumerable names with same potency. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. तो बोले कि भगवान के नाम पे भगवान के सारे पोटेंसीज हैं, एंड इसको करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कोई किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं इसको। लेकिन हमारे लिए कोई टेस्ट भी नहीं है, टेस्ट ही नहीं है हमारा ये सब करने के लिए, ना हियरिंग ना ग्लोरीफाइंग, डेवलपिंग द टेस्ट फॉर देखिए, इससे हियरिंग। पहले वाले श्लोक में ये बताया गया कि आप ऐसे ऐसे सर्वेंट्स, भगवान के ऐसे सर्वेंट्स को सर्व करोगे जो अपना लाइफ रिस्क में दे देते हैं। मतलब भगवान के सर्वेंट्स को अगर आप सर्व करोगे तो आप में आप क्वालिफाइड होगे सुनने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कृष्णा फिर उन लोगों का हार्ट प्यूरिफाई कर देते हैं और सारा मटेरियल एंजॉयमेंट और वैसे उस चीज के डिजायर्स सबको क्लीन कर देते हैं, उसका जो डेवलप कर लेता है अर्ज टू हियर हिज मैसेजेस, और विच आर इन देमसेल्व्स वर्चुअस व्हेन प्रॉपरली हर्ड एंड चैंटेड। तो इसका ये एसेंस है कि आप जब वैष्णव सेवा कर करके क्वालिफाई हो जाते हो भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए और उनके ग्लोरीज को सुनने के लिए, तब आपका असल प्यूरिफिकेशन निकल के आप देन यू रियली गेट प्यूरिफाइड। एसेंस है वैष्णव सेवा, मेरे को इतना समझ में आया सिर्फ ये देखो। पहले पैरा पे पहला पैरा नहीं, ट्रांसलेशन ही है। ट्रांसलेशन से अच्छा। हमें टेस्ट डेवलप करना चाहिए, चैंटिंग करना। वो सेवा से वो और ये कि the Lord is reciprocally respondent to his devotees. When he sees that a devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. The Lord is more anxious to take us back into his kingdom than we can desire. भगवान ज्यादा एंग्शियस है हमें ले जाने के हमें लिए ले जाने के लिए। हमसे ज्यादा। Most of us do not desire at all to go back to Godhead. Yeah. Only a few men want to go back to Godhead. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respect. Then यहाँ पे sins का बात किया गया है. Then it is very difficult to get rid of the such desires. Women and wealth are very difficult problems for the devotee. Making progress on the path back to Godhead, and many students in the Tibetan fell victim to this allurement and thus retreated from the path of liberation.
but when one is helped by the Lord Himself. But when one is helped by the Lord Himself, the whole process becomes as easy as anything by the divine grace of the Lord. Then ये लास्ट वाला जो पैरा है ये मुझे सबसे अच्छा लगा ब्रो. To become restless in contact with women and wealth is not an astonishment. ये कोई नई बात नहीं है bro. Because every living being is associated with such things from remote time, particularly immemorial. And it takes time to recover from this foreign nature. Now, this is not our original nature, but because of the contact, we have adopted this type of nature, attachment towards women and wealth. But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbances. And gradually, all disturbing elements are eliminating from his mind. अब होगा प्रभु, Yeah? The कब process एलिमिनेट is, होगा? that's why we are conducting Bhagavatam reading session every day. पढ़ के एकदम दिमाग घूम जा रहा है मेरा. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी वो रुपेश प्रभु को एक लिंक भेजे हैं प्रभु जी, उसमें हो जा रहा है पर उसमें क्या है वो क्या बोलते हैं डाउनलोड, मतलब वो वेबसाइट में ऐसे आप जय। वीडियो भेजा हो लाइक इंग्लिश जो उसमें दोस्त गेट जय।